So, before we switch to today's class, before we start today's session, let's learn what we have learned in yesterday's class. Okay, so yesterday we gone through these two files, list function part 2 and list function part 3. Okay, so what is list function part 2? So list function part 2 consists of more of how to like delete the items from list, right? So there were these four methods that we have learned, that is remove, pop, del and clear. So what remove will do? It will remove a certain element from the list. So consider this is a list which consists of integers, which consist of strings. So I particularly wanted to delete this iOS, right? Because like there are some people who don't really like iOS. So I will use this remove function, like dot remove, and then I will use this iOS as a remove object, and it will, when I check the new list, there is no iOS, right? So what we have understood in the remove function, you need to specifically need to mention, you need to specifically mention what you want to remove. Okay, so if I want to remove 128, so it will just, you just have to mention 128 in the remove braces, right? And and there is another method which is called as pop function. Okay, pop function, pop, like it means like popping the function out, popping the any element from the list. So we took this one list which has cricketers, right, which has Bollywood actresses. Okay, so what we did is we want to pop Shah Rukh from the list. So specifically what we did, we we mentioned the we mention the index of Shah Rukh, right? Index of Shah Rukh. So Dhoni's index is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and so on. Okay, and so on. So we wanted to get rid of Shah Rukh from this list. So what we did is we use this pop of their its index, like Shah Rukh's index, right? So this is how we did it. Then you can check the new list. New list does not really have Shah Rukh in the in the list. Then again we did the same, pop of 2. Then the what is 2 here? 2 here, the index of Kajol, right? Because now Dhoni becomes 1, Dhoni becomes 0, Virat becomes 1, Kajol becomes 2. Since there is no Shah Rukh here right now, okay? There is no Shah Rukh. So the new list looks like this. Okay, new list looks like this. And again, there is one more thing when we learn about pop. So if you don't mention any index here, it will automatically delete the last item. Okay, so previously the list was looking like this, and when we use like a simple pop and then nothing inside the you know pop braces, automatically it will delete the last item. So if I run this again, it will delete this also. If I run this again, it will delete this, and if I run this again, it will empty the list. Okay, it will empty the list. And if I mention index which is not there, like we can see it is just about two elements, like 0, 1 and 2 elements. So there is no 7 in the list. So it will throw some error, that is like the pop is out of index. Okay, the pop is out of index. Then there is this third function that we learned yesterday, that is clear. So what clear will do is, it is very straightforward. It will directly it will directly clear the entire index. So it will delete all these elements. It will delete all these elements.
Okay, it will delete all these elements, and now what you can see here is an empty list. Okay, an empty list, so which do not have these elements, right, which do not have these elements. So it will clear the list. Okay, it will clear the list. So del also does the same, but it deletes the entire list. So if I say cities, like delete cities, it will delete the cities from the entire, like from the Python memory. Okay, from the memory it will delete the function or the variable or the list or whatever. Like if you see, if you store anything, like let's say you store index, sorry, string or tuple or anything. But if you use del function, which is delete, so it will delete the entire element, okay, entire list. And if you say delete cities index 1, okay, index 1, what is index 1? Kashi, right? What is index 1? Kashi. So now if you say this Kashi will get deleted, and if you see the new list, there is no Kashi, right? The Kashi was here previously, but now it's it has been deleted. Okay, it has been deleted. So you can also delete particularly any element, but you need to mention, what you need to mention is its index. Okay, its index. And if you directly use like delete cities, it it deletes entire element, like it will scratch everything. But in clear, it was at least returning the empty list, right? In clear, it was at least returning the list, empty list. You can see we were getting the empty list. So del is something which is not really recommended in the industries. Like they won't really encourage you to use such kind of functions, because these functions really delete everything. So you should not really use this, but you should know, right? You should know what this function do, right? Then the second what we learned is sorting in the list. Okay, sorting in the list. What is sorting? Sorting means there can be two types of sortings. One is ascending sorting, and the second is descending sorting, right? And both the function, both the sorting use this sort or sorted function. Okay, sort or sorted function. So let's say we have marks of students from 67 to 98. Okay, and if I say marks dot sort, it will sort the marks from smaller value to higher value, right? Smaller value to higher value, smaller value to higher value. So if anyone says, like, tell me the lowest marks and tell me the highest marks, so you can also say marks dot, marks dot max, right? Marks dot max. It will give you uh, list has no attribute to max. It has actually. Anyways, let's say you have this sorted list now, and if you say, if you want to get the uh, the largest, like largest number, so you can say minus 1, right? Minus 1, so you will get this, the last element, that is 98. And similarly, if you want to get the smallest marks, or like very poor students marks, you can say marks of 0, the first element, right, which is 54. This is also the one of the way you can make a use of sort function. Okay, sort function to find the smallest or largest element. Okay, smallest or largest element. Or you can also find using max or min function. So we will learn this. So if you say max, you will get maximum marks. If you say minimum, you will get minimum marks. Okay, so this is also one of the way you can use max and minimum function to understand or to get the minimum marks and the maximum marks. Right? So basically we were understanding how sorting does. So this sort function will
sort each and every element, sort each and every element from lowest to highest. So this is called as ascending sorting. Okay, this is called as ascending sorting. Whereas sorted does the same. Okay, sort and sorted does the same, but you have to add the marks or a particular list inside the sorted function. Okay, inside a sorted function, and you need to create any object in order to store the result. Okay, in order to store the result, otherwise it will not take the changes. Otherwise it will not check the changes and it will return the initial list only. Okay, it will return the initial list. So sort and sorted are almost the same. So this is the logic behind this sorted or sorted function. So where we use couple of loops. So there is, we use I loop, J loop, and some logic here which you really don't want to understand. Like you should, it is fine if you don't understand this, because I think from tomorrow we will learn loops, this for loop and while loop. Okay, we will learn loops, for loop and while loop. Then the next function, this is the another example of sort. So sort also works with strings, right? It does not only work with the numbers, right? The numbers, but it also works with strings. So you can see here, Ahmedabad comes first, then B for Bangalore, Chennai, Delhi, Mumbai, Nagpur, and Pune. So this is A, B, C, D, right? So, but this is also one of the way to understand. Python automatically consider. Okay, I'll teach that later. I'll teach that later. All right. So sort function later means today. So what I was going to tell you is Python consider numbers first. So if I add number here, so Python will consider numbers first. Or if I add any symbol, let's say I add and this, okay, and this, and if I add, let's say, a capital word like uh, umbrella, umbre, something like that. And if I run this sort again, so int and string does not, okay, this should not be together only. So if you see here, so this character, like Python understand character as a very smallest, then it consider the uppercase, and then it considers the lowercase, right? The lowercase. So the hierarchy looks like this. Special characters, special characters are smaller than uppercase, are smaller than smaller case, right? So this is how the entire flow works in, right? This is how the entire flow works in. So if we add this special character anywhere, if I say and and AFK, if I run this, it will consider this as the smallest first, then this, then uppercase, then smaller case, and smaller case may be, it will consider A, B, C, D. Even uppercase may be, if I add apple, something like it, and if I run, it will consider apple first, right? So this is how the Python understand the keywords, or Python understand the strings or sorting. Okay, sorting function works like it. Then we understand what is descending sorting. Okay, descending sorting. So it is just like the sort, but you just do this, like you just use reverse function. Okay, reverse function. So let's understand this first. Sort is the using of sort is common, like in common in both ascending and descending. But in descending, you make a use of this reverse keyword. Reverse equals to true.
Okay, reverse equals to true. So in ascending, we were just saying max of marks marks dot sort this. So this will ascend the sort the list in ascending way. Whereas when you add this reverse equal to true, it will reverse the entire list. Okay, it will reverse the entire list. Initially, it was looking like it, not like this. If I need to clean this, rub this, and then it will give me in a ascending order. And when I say reverse is equals to true, it will give me the descending one. Okay, it will give me the descending one. And then there is another way of doing it, which is using step size as -1. So we have learned this in when we were learning step size. So when you use -1 as a step size, it will just reverse whatever the input is. Okay, it will just reverse whatever the input is. Then there is a sort function is also there. Here also you use reverse equals to true. Okay, reverse equals to true. That will sort the list in the descending way. Okay, in the descending way. So so let's start with today's topic, that is 1.11.1 list functions. I think this is going to be our final if we somehow sorry if we somehow close this today, like cover all the functions in list part 4. Okay, so I would just like to list each and every function that we have learned till now. So first we just learned this list, like how list is. Then I think we learned this append function, which will add the function, or like if you want to add any element in the list, it will add in the list. And if you want to add the like smaller list into the larger list, it will add, but as it will add as a sub list, right? Then we learned this extend function, right? Then we learned this extend function. So extend and append does the same work, but extend will add the smaller list not as a sublist but as a elements. Then we learn insert. So insert is something, it is also used for adding elements, but you need to mention the index of the element, right? Index of the element. So it adds the element whichever desired index you want to add, right? Then we learn remove, right? Then we learned remove, so it will remove the elements. You need to mention the element name. Then we learned pop, right? Then I think we learned clear. Then we learned del, right? Del does not really have this. Then we learned, I think, index, right? Index is also something that we have learned. Then we learned sort and also sorted, sorted with reverse also, right? With reverse also. Reverse is equals to true. This also we just learned. Then today, I think we should learn about count. Okay, count, or let's say max. Max is something is kind of a easier one, but I will just give you some example. Then let's learn what is mean. Okay, let's learn what is sum. Okay, minimum number, maximum number, summation, right? We can also learn pow means power, and we can also learn about mean, mode, median. There are few more things like that. So let's learn about this. And there are some mm, some function called shallow copy, sha shallow copy, and deep copy. So if time permits, we will complete these copies also. Okay, if time permits, we'll try to finish these shallow copy
and deep copy as well. Okay, shallow copy and deep copy. So we remained with these. So let's add this reverse as a separate one. Reverse, because reverse has its own presence also. Okay, so let's go through these first. Day before yesterday, I think we learned this. Yesterday, we learned these many. Today, we'll try to finish these. And if time permits, we will try to finish this. Okay. So let's start. So these are the functions in Python completely. And there are many more functions in Python. And we will also cover those. But let's start with this reverse. Okay. Reverse function. Reverse function. So why it is plain text? Any question there in these? Any question, guys? Any question there in these elements or in these functions? Anything like any smaller question, any simple if you don't understand, if you have uh, slightest of doubt, you can ask, okay? If you have slightest of doubt, you can ask. So let me start with the today's first function, that is a reverse function. Okay, a reverse function. So what is reverse function? So the name suggests it will just reverse whatever we give. Okay, so let me just give you one list is equals to let's say 100, 300, 3000, something, something, 200, 900. Okay, and if I say lis, whatever I have written is, and if I say reverse and give a function, and again if I check it, so it will just, let me just connect the kernel. What it will do is it will just reverse what we give. Okay, it will just reverse what we have given. So you can see 900 is first, initially it was last, and similarly the way, like right, 200 and this, right? So this is with the numeric example, right? This is like the numeric example. But what if I have some words in there, like let's say list2 is equals to if I say, you know, let's say physics, okay, or biology, or if I say maths, and I think chemistry, right? So let's say these are the, this is my list of subjects in 12th. Okay, and if I say list2 is equals to or reverse, so if I reverse this, what will happen is it will also work, and it will just reverse whatever is there in the list. Okay, it will just reverse whatever you give in the list, right? So this is with strings example. Okay, strings examples. So whatever I have given, it will just give me just ulta. Like chemical will come first, then maths, then bio, then physics, right? Then physics. But what if I give the mixture of both, right? What if I give the mixture, like let's say this 3 is equals to, I say I have these, okay? I say I have these, and I say I have these. I say I have these also, but let's add them in the middle. Okay, let's add them in the middle. So what will happen now? What will happen now? I just have to type dot and then R. If you forget the function name, then you will get it here like remove reverse. I want reverse.
and if I return list 3, right? If I return list 3, it does the work, right? It does the work, right? It does the work. Since we have reverse function, there is one more function which is called as reversed, right? Reverse. Like there were some functions like sort and sorted, right? Yesterday we learned this. So there was one sort function, now there was also sorted function. So it is just similar like reverse and reversed, like reverse and a reversed function. So ये e ज़्यादा हो गया यहाँ पर, reverse and a reversed function. So let me just tell you about its like how this is different with reverse, right? Let me just give you one example first. Let's say list 4 is equals to, we have this, okay? List 4 is equals to, we have this. And if I say reversed, okay, if I say reversed, and if I say list 4, what will happen is it will not make any changes. It will give me this object, by the way. So this is called as object. But if I now say list 4, I will get the same list. It has not done the work. Why? Because you need to save this output somewhere, right? You need to save this output somewhere. So now let me just take the same example in the another cell, and uh, if I say reversed list, right? Reverse list is equals to, and if I say reverse list, and if I now ask it, wait, I have to say list of, okay. So now then only it will just reverse whatever we have got, okay. Now math will here come here, then this number will come here, the physics will go at the last, right? So let's write about this. Let's write about this what we have just understood, right? So the reversed function does not reverse the order, right? Does not reverse the order of the list unless unless it is taken into another variable, right? So we had to take this particular thing into the another variable, then only it gave us some output, another thing it does is it also creates an object, right? It's also create an object of the reversed list. So if you see here reverse list, so this particular thing creates an object, so this is called as object, okay. This is called as object. So let me just comment here as well, object. So Python is an object oriented programming language. It creates object first, okay. It creates objects first. So you will understand this going ahead also when we will learn oops is object oriented programming, which is one of the most important topic in Python. So you will learn there also, but motamoti like consider this, Python creates some objects. So the objects look like this, and you need to unpack that object. So when I say list of this particular object, it will return the list, okay. It will return the list unless it will not return. So what we got is it also creates an object of a reverse list, okay, of a reverse list. And this object can be unfold can be unfold
by using list constructor. Okay, so this is called as list constructor. So this is used to unpack whatever the value which is inside this object. Okay, so inside this object. So these are our nodes. Whenever we will go through these nodes, we will understand what this two example needs to say. Okay, what this two example needs to say. So is there any questions here? So if you have any questions, please drop in the comment box. And if you have understood this, please type yes. Please type yes. Okay. Okay. So now let's move to, so we have covered this reverse and we have covered reversed two. Okay. So these two that we have covered. Okay. So मैं यहाँ पर एक space दे देता हूँ and then यहाँ पर एक space देता हूँ. So this is done in, yeah, day before yesterday. This is done yesterday and we'll try to cover this today. Okay. So now we have some 23 minutes. So let's cover most of them. So now let's understand what is count. Okay. So count is a very straightforward function. Okay. So let's understand count function. Count function in Python. Okay. Count function in Python. So the name suggests it does give some count, right? Let's say list one is equals to, let me just copy, uh, or let's copy this one. These are the same. Okay, anyways, let's copy and then we'll think of. So now, let's add one more, bio here, right? People like biology quite more. Let's add physics also, okay? And let's add these 3000 also, okay? So you may have got the idea why I have added those numbers or those strings again, because the list function, or sorry, the count function will give you the count, right? Will give you the count of whatever you mention. So if I say I want to know how many times this physics have come up in the above list, right? Above list. So if I run this, I will get, okay, this has come twice. Okay, this has come twice. And if I say again list one, so you need to mention this number name of a list and you need to type dot c, you will get this count. Okay, and if you say, okay, tell me how many times this 3000 has appeared in the given list, so it will also give you the count. So okay, this has occurred two times. Okay, the 3000 and physics has occurred three times. So what if a word is occurred only one times? Okay, like this, the math occurred one times. It will say, okay, it occurred only one time, right? It occurred only one time. So this will just give you the count of whatever the item which is there in the list. Okay, so you may have been thinking, this looks quite easy, why you are stressing much about all these things? But as you know, like, if these are very easy to understand, these are very easy to forget also. Okay, these are very easy to forget also. So you must understand, like, why, like, give your full attention and you will get to know all this. You won't forget. Okay, and then there is the another function. It's like min and max. Okay, min and max function. So I hope this is clear. I won't ask you to type yes in the comments because that is like quite easy, right? Quite easy. So let's take one more list.
right? Let's create one more list. Mm, List of numbers first. 23, 43, 54, something, something, something. Okay. And if I say a list 2 of max, if I want to know what is the maximum number in this list, you can say max of list 2. Okay, you can say max of list 2. It will give you the maximum number. So maximum number is 76, right? And similarly, if you say minimum of what is the minimum number in the list 2, you will also get this as 23. Okay, so if you want to know whichever is the maximum number and in the list and whichever is the minimum number from the list, these two functions will help you. Okay, these two functions will help you. So there is one more thing that we recently learned. Let me just create a list. 23 is equals to, if you add any number, right? If you add any string, okay? If you add another string, if you add capital or uppercase, if you add any symbol, right? And again, if you add something with the capital, okay? So so okay, this will give error, okay? This will give error. So we have small letters, we have capital letters, we have special characters. And if you use this minimum of list 23, it should give this special characters first. Okay? It will give this special characters first because the the flow is something like it. I think I don't know where I have just explained, but I did explain. So if I run this, it will give us special characters first. And if I say max of this list 23, it will give me the smallest numbers with the I think EF. So F, this will be the max character. Okay, FKWK, right? FKWK. So is there any questions? Like, is there any confusion here? If there is any question, if sample number present in one list, then what will happen? If a same number present in the same list, okay, that's a really interesting question. That's a really interesting question. So let's say mm, we have, if there is like 32 present, nothing will happen, okay, because that is not minimum number or maximum number. But what if there is a similar minimum number, okay, at start at end, and it will return the same number, right? It will return the same, like minimum number. These two numbers are equal, so it will just return any one, right? We just want the smallest number. We don't want the count of it. So you can also say like count of this. Okay, give me the count of this. So you can say count count of smallest smallest number. So I've created this variable count of smallest number. So what happened here is, I don't think so it will work or what, but let's try if we are. No, it will work. Okay, anyways, this will also not work. Okay, anyways, so your question's answer is basically it will just return the number whichever, like if you like add 3 times also, it won't really make mistake, won't make any difference because the smallest number is 23, be it this, because 23 is always equals to 23. If I check like this, 23 is equals to 23, it will return true, right? It will return true because 23 is equals to 23. So similarly, if this is it,
Any questions? Someone raised hand. Okay, great, great. Good question, by the way. So that is it, guys. Mm, so let's move to another function. So how many we have covered till now? Where is it? So we have covered this min also. So these many things that we have covered. Okay. So let's understand sum and power or mode. Okay. So let's understand summation or power or even mode mean. Okay. So summation or sum function. Okay. Sum function. So let's say we have list x is equals to list x is equals to numbers only, all numbers. So someone asks you कि इसका मेरे को सम करके दे दो, ठीक है, इसका सम करके दे दो. So you can't take the calendar and you should not do that. You just need to say sum of list what x, and if you say this you will get the summation, right? You will get the summation. So the how the working of this sum does is there is very simple code. Let's say if I create a summation is equals to empty list. Okay, so I'm just telling you how the back end working of this function work happens. Okay, so this is, we say function, but this is also an object, right? Because Python is an object oriented program. So anyways, let's not go there. So if I use for loop, let's say for I in list x, okay. If I say for I in list x, and if I say summation, okay, यहाँ पर ये जो summation है इसको plus is equals to 1 कर दो, सॉरी हाँ I कर दो, right? मतलब this I will check each and every element and it will just add one element into the another element. So I will add into the plus equals to I. So next element में ये add होते जाएगा, and if I return this summation now, okay, summation now, it will give me the same. Int object has not iterable. Why it is int? Oh, because it is a list. I just have to say 0 because 0 में add करना है मुझे, 0 में add करना है मुझे. If I run this, it will just give me the same output. Okay, so ये same summation जो object है इसके पीछे ये working हो रहा है, ठीक है, ये working हो रहा है, right? I hope this is understood. Then there is another function. So more or less when you have long list and if you want the summation, you can use this function sum of whatever the list you have. Okay, whatever the list you have. Then there is another function which is called power function. Okay, so this function is from math library. Okay, math library. So there is a entire separate math library which is there. So let's import math here. Okay, let's import math here. And now if I say maths dot power, okay, maths dot power, and if I want 5 raised to 2, मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए. Okay, I want 5 square. So I run this, I will get 25. Okay, 25. What you have to do is you need to import math first. Understood? You need to insert math. Like math will have entirely like all the mathematics things that you learn in 12th, 10th. So if I want pi functions value, right? We know, right? Pi is equal to 3.14. So if I run this, we will get 3.14, right? 3.14. So math is like this math function will have everything that you have learned in your 12th function.
right? Everything. Let's say, uh, mm, what we can say. There are statistics is also there. Mm, Let's import statistics. So if I say statistics dot mode, okay, I want to find mode of this particular list x, ठीक है? तो list x का मुझे mode find करना है. This MODE mode. Mode होता है, median होता है. So it will return, okay? The statistics dot median है. See, these many functions are there. Median low, median high, median group, then median होता है, then we can list x, ठीक है? You can also get mean, like you just have to say statistics of mean and list x, okay? So it will give you the mean of whatever the mean of that particular list. So it will give anything which you want, okay? It will give anything. There is one more function in the NumPy, so we will also learn this NumPy. So this function also has mean, like if np.mean, and if I say list x, it will also give me somewhere around the same. So I think we don't have numpy, so it is taking time, but it will just give us the same thing. Okay, it will just give us the same number, but there is this np dot something that you can ignore. Okay, so this is all about these functions. I think I have covered almost each of them. So uh, I'm going up and down. So we learned mode, then we learned median, then even we learned mean. Okay. So power is also done, summation is also done. So is there any questions here? Is there any questions here? Let me just repeat this. So if you have the long list, you just say summation of that list, you will get the summation. If you want to get the power of any number, you can use this math function. So you just have to say math dot power number and its square, or if you want cube root, it will give you cube root also, or 5 raised to 4. It will give you whatever you want, right? If you want maths like pi function value, it will give you math dot pi is pi function. Then we also learn about the statistics. What usually statistics has mean, mode, median, right? So we learned these all things. And also this NumPy, which is numerical Python in short, people call. So there are these two famous library which are called as Pandas and NumPy. So we will learn this library in very depth, very depth. So coming lectures will be mostly depending on this Python, Pandas and NumPy. These are best friends of data scientists or AI engineers. Okay. So NumPy is something that you want, like if you try to forget, even if you can't forget. So this is how the NumPy is. So if is there any questions, please type question in the comments. Or if you have understood, you can type yes in the comments. If you have understood, you can type yes in the comments. Great, great, great. So now we left with this uh, shallow copy and deep copy. We still have 5 minutes. So let me just mm, explain you these quickly. Okay, so first let's go with the let's understand the shallow copy and and deep copy. Okay, deep copy. So these questions you will definitely get in the in the interview. Okay, you will definitely you will get this question in the interview.
So let's understand what this shallow copy is first, right? So when we have let me just give you first example, and then we will write the definition. Okay, let's say we have list 2e 2, and if I have this something and then something then something then something. Okay, quickly I'm just doing this, and if you do mm, you know uh, copy of this particular list. Okay, let's say list 1 dot copy. Okay, and if you store the list 1 into copied list. Okay, copied list. If you store this copied list into the copied list, this list 1 is now a replica, right? Replica. And if you print this copied list, you will get the same. Okay, you will get the same. Let me just print this also. Print list 1. Okay, both are similar, right? Both are exactly entirely similar. Okay, entirely similar. But if I now change, let's say list 1 उसका जो जीरोथ एलिमेंट है, ठीक है, जीरोथ एलिमेंट क्या रहेगा लिस्ट 1 का 122. ओके, 122. आई वांट टू चेंज दैट 122 टू दी 1000. ठीक है, टू दी 1000. नाउ इट हैज चेंज्ड. ठीक है, इट हैज चेंज्ड. So now if I take these two, and if I print this, you can see from list 1 the changes has been done, but जो copied list है उसमें कुछ भी नहीं हुआ है. Okay, it is entirely the same. ठीक है, ठीक है. Copied list समझ में आ गया कि भाई, like if I make the changes in the parent list, if I make the changes in the parent list, so whatever the copied list is there, जो हमने ये copy बनाई है, it won't have any changes there. Okay, but but let's understand this with nested loop, sorry, nested list. Okay, so there is a term called nested list. Okay, there is this term called nested list. So let me just give you one example. List nest n list. Okay, list n, which is a nested list. So let's say I have this 2 comma 3, then I have 4 comma 5, then I have 6 comma 7. ठीक है, so now if you see, इसको हम nested list कहेंगे. ठीक है, nested list कहेंगे. So if I print this, it looks the same. ठीक है, it looks the same. But now what I will do is I will create a copy of this. ठीक है, मैं एक copy create करता हूँ. So what I will say, n of copied list. ठीक है, nested list का copy है ये. ठीक है, nested list का copy है. And if I print this, it looks the same. ठीक है, कोई difference नहीं है. It looks the same. Looks the same. And now if I print it, print the list n. ठीक है, दोनों भी सेम दिख रहे हैं. ठीक है, बट ठीक है, अभी यहाँ पर हमने करा था दोनों भी सेम है. देन व्हाट आई डिड इज आई मेड अ चेंज, राइट, आई मेड अ चेंज. तो मैं क्या करता हूँ, what I'll do is I'll change some element from this list. Okay, I'll change some element from this list. So ये जो 2 है इसको मैं चेंज करता हूँ. ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ. लिस्ट n में से जो जीरोथ एलिमेंट है, ठीक है, जो जीरोथ एलिमेंट क्या रहेगा, दिस एंटायर एलिमेंट विल बी जीरो. ठीक है, जीरोथ एलिमेंट क्या रहेगा 2,3. ठीक है, 2,3. इस 2,3 में मुझे 2 चेंज करना है. सो व्हाट आई विल डू इज 0 अगेन. ठीक है, सो व्हाट द आंसर आई विल गेट इज 2. ठीक है, इफ आई रन दिस आई विल गेट 2. सो आई वांट टू चेंज दिस 2 टू 1000 अगेन. ठीक है, मुझे ये 1000 में चेंज करना है. सो इफ आई रन दिस एंड नाउ if I print list n, if I print list n, the 2 has been changed to what? 2 has been changed to what? 1000. But now if I again call this n
capital of list, this has also this has also changed. Okay, this has also changed. So you will see like this is all everything same. Like here also this was this was same, this is same, but the difference is here. So when you work with the simple list, when you work with the simple list, if you make if you make any changes in the parent list, the normal list won't get changed. But when you work with nested list, the parent, if you change the parent, the copied list will also change. Right? हमने तो ये copy बनाया था ना, we made a copy here, so why the copy shouldn't have changed. But this is the problem with shallow copy. This is the problem with shallow copy. What happens अगर तुम nested loop के साथ काम करते हो, these kind of nested loops, तो तुम्हारा copied list भी change हो जाता है. ठीक है, तुम्हारा copied list भी change हो जाता है. So let's type some problems with the whatever the problems that we have. So when we have nested loop or nested list, okay, nested list, the shallow copy, okay, the shallow copy does not work, well. Okay, does not work well. Basically, change in the list will also change in the copied list. So if we make change in the original list, the same change will reflect in copied list also. ठीक है, this is the learning. So when you work with the normal list, अगर मैं ये नॉर्मल लिस्ट चेंज कर दी उसका पेरेंट, तो उसका कॉपी लिस्ट में कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन व्हेन आई डू द सेम विद द नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, तो जो मेरा कॉपीड लिस्ट था वो भी चेंज हो गया. ठीक है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज डीप कॉपी. ठीक है, द सॉल्यूशन इज डीप कॉपी. सो डीप कॉपी सो डीप कॉपी में ये प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, डीप कॉपी में ये प्रॉब्लम नहीं होगा. सो लेट मी जस्ट गेट द सेम एग्जांपल. ठीक है, डायरेक्टली नेस्टेड पे आ जाता हूँ मैं. ठीक है, बिकॉज वी डोंट रियली हैव टाइम टुडे. सो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ डीप कॉपी, अच्छा डीप कॉपी है नहीं, वी नीड टू इंपोर्ट दिस. सो डीप कॉपी कहाँ से आएगा? फ्रॉम कॉपी import deep copy copy. ठीक है, तो ये दोनों कॉपी से आ जाएगा. ठीक है. and so now if I say deep copy, why it is not coming? अच्छा, I need to say like this, deep copy of list n. ठीक है. So what happened is now here if I print this we get the same. So अभी इस कॉपी का मैंने एक डीप कॉपी चेंज बना लिया है. ठीक है, दिस इज द डीप कॉपी. अभी इसका एक एकदम डीप कॉपी लाइक इफ आई मेक चेंजेस लाइक दिस, तो मैं फिर से क्या करता हूँ कि इसका जो ये 2 है इसको मैं चेंज कर देता हूँ. ठीक है, इसका 2 मैंने अभी चेंज कर दिया. सो नाउ अरे भाई, सो नाउ इफ आई make changes here, if I check what happened, so ये तो चेंज हो गया. ठीक है, the 2 has been changed to 1000. but now if I check the nested list, this has not changed. ठीक है, this has not changed. so जो हमारा शैलो कॉपी में क्या हो रहा था, the nested list का अगर मैंने पेरेंट का चेंज कर देता हूँ, तो जो उसका चाइल्ड है, जो कॉपी है, उसका जो बच्चा है, वो भी चेंज हो रहा था. बट इन डीप कॉपी दिस इज द मेन डिफरेंस. even if I make the changes in the parent even if I make the changes in the parent list, the child does not inherit the changes.
Okay, the child does not inherit the changes. So this is all about the shallow copy and deep copy, guys. If you have any questions, type in the comments. If you have any questions, type in the comments. Otherwise, we can close the call. And if you understood, you know what to do. If you understood, you know what to do. Type win in the comments. Or if you have any questions, you can ask. We can discuss this. This is a little bit complex to understand. Not really, because like रिपीट शैलो कॉपी ठीक है चलो शैलो कॉपी समझते हैं ठीक है सो शैलो कॉपी शैलो ठीक है तो कॉपी क्या होता है सो दिस इज द लिस्ट ठीक है हमने इसका एक कॉपी बना लिया दिस इज अ कॉपीड लिस्ट तो ये कॉपी है इसका राइट ये कॉपी है इसका सो हमने बस एक उसका जेरोक्स निकाल लिया ठीक है इसका हमने जेरोक्स निकाल लिया अब ये जेरोक्स फाइल 1 है और ये जेरोक्स फाइल दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज जेरोक्स राइट दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज जेरोक्स बट जब हम शैलो कॉपी के साथ वर्क करते हैं कभी भी सिस्टम में ठीक है और अगर वो लिस्ट एक नेस्टेड लिस्ट है दिस इज अ नॉर्मल लिस्ट ठीक है ये नॉर्मल लिस्ट के साथ ये अच्छा काम करता है ठीक है इफ आई मेक चेंजेस इन द नॉर्मल लिस्ट अगर मैं नॉर्मल लिस्ट में चेंज करता हूँ अभी ये जो मेरी पेरेंट लिस्ट है उसमें मैंने चेंजेस करे फर्स्ट एलिमेंट मैंने 1000 कर दिया तो जो कॉपीड लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ राइट क्योंकि ये जेरोक्स है ना अभी ये ओरिजिनल फाइल में मैंने अगर कुछ चेंजेस कर दिए तो जेरोक्स में कुछ नहीं होना चाहिए राइट बिकॉज दैट इज एन इंडिपेंडेंट फाइल लेकिन ये जो शैलो कॉपी है विच इज नॉन एज कॉपी ये कब फेल होता है जब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट हो नेस्टेड लिस्ट मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट हो एंड इफ आई मेक एनी चेंजेस इनसाइड अ नेस्टेड लिस्ट अगर मैंने ये क्या करा ये 2 को 1000 में रिप्लेस करा ठीक है 2 को 1000 में रिप्लेस करा अभी मैंने क्या करा जो ओरिजिनल फाइल है ओरिजिनल जो मेरा फाइल है उसमें चेंज किया लेकिन जेरोक्स में तो चेंज होना नहीं चाहिए था जेरोक्स में तो चेंज होना नहीं चाहिए था दिस इज वेयर दिस शैलो कॉपी फेल्स यहाँ पर ये फेल हो जाता है इट इनहेरिटेट्स क्योंकि ये समझ नहीं पाता है कि अरे ये चेंजेस पेरेंट में हो रहे हैं मुझे वो चेंजेस एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है वेयर एज अगर आप वो डीप कॉपी यूज करते हो दिस डीप कॉपी इफ यू यूज दिस और अगर कोई भी नेस्टेड लिस्ट में चेंजेस होते हैं ठीक है नेस्टेड लिस्ट में अगर कोई चेंजेस होता है तो वो लाइक दिस इज ओरिजिनल दिस इज जेरोक्स तो एक बार तुमने जेरोक्स बना ली उसकी एक बार कॉपी बना ली विच इज अ डीप कॉपी एक बार आपने एकदम अच्छे से उसको डीप कॉपी करा है तो ये चेंज नहीं होगा वॉट एवर द लाइक इसमें तुम ना जो सेकेंड एलिमेंट है इसमें भी मैं क्या करता हूँ ये वैल्यू डाल देता हूँ इफ आई चेक नाउ तो इसको कुछ नहीं होगा तुमने पैरेंट में कुछ भी चेंज कर लिए तो डीप कॉपी में कुछ नहीं होगा सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉपी एनी एलिमेंट तो आप जब भी रियल वर्ल्ड में काम करोगे जॉब पर काम करोगे सो यू विल बी डीलिंग विथ लाइक लॉन्ग लार्ज लिस्ट है ना लाइक बड़ी बड़ी लिस्ट रहेगी उसमें वह ना फंक्शंस आते रहेंगे जाते रहेंगे एलिमेंट्स रहेंगे लॉन्ग लॉन्ग सो वेन एवर यू यूज डीप कॉपी क्योंकि अगर मैं एक कॉपी बनाता हूँ लेट्स से आई हैव अ डेटा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल राइट तो मैंने अगर उसको कॉपी बना के रखा है कहीं पे सो आई डोंट वांट कि जब मैं पेरेंट में या फिर पेरेंट फाइल में अगर चेंज करूँ तो मेरा जो कॉपी बनाया हुआ है जो मैं सेफ साइड रखना चाहता हूँ उसमें भी चेंज हो ठीक है सो शैलो कॉपी यहाँ पर फेल हो जाता है विच इज लाइक अगर मैं पेरेंट में भी चेंज कर देता हूँ तो कॉपी में भी चेंज हो जा रहे हैं ठीक है सो दिस क्वेश्चन इंटरव्यूअर विल आस्क you just have to say interviewer will say कि what is the difference between deep copy and shallow copy so you have to say shallow copy and deep copy are both used for creating a copies of a list but when we deal with these nested list right list inside list and when we try to make any changes in the parent file the shallow copy does not work very really well right it inherits like वो उसके changes accept कर लेता है whereas deep copy नहीं करता है deep copy stays the secure इसमें changes नहीं होते हैं whatever experiment you do here
वो चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, ओके, ग्रेट, all right. If you are understood, you know what to do. You need to type win so that I will get to know everything is clear today. And if that is true, then we can. Acha, GitHub. Okay, great, great. So GitHub ka I will tell you. Hmm, okay, now you will see something like it. लेकिन यहाँ पर कोई रिपोजिटरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट्स पे आ जाता हूँ। अच्छा, you will look like this, something it will look like this, or maybe it will look like this, but यहाँ पर ये रिपोजिटरी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये रिपोजिटरी नहीं रहेगी। So what you have to do is you need to click on the new, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड यू नीड टू क्रिएट अ रिपोजिटरी। उसमें करना है लर्न पाइथन कर लो, या फिर वट एवर नेम, लाइक हमने जो असाइनमेंट है ना, यू कैन से असाइनमेंट, असाइनमेंट, ये ऐसे असाइनमेंट ऑन पाइथन, ठीक है। ऐसा कुछ यूज कर लो, ठीक है। और इसको प्राइवेट कर देना, ठीक है, क्योंकि फिर अगर तुम पब्लिक करोगे तो इट विल लुक लाइक पीपल कैन सी इट, ठीक है। इसको प्राइवेट कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर वी विल पुश आवर असाइनमेंट्स। तो आपका गिटहब का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ है नहीं, लाइक आप जैसे फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो, इट इज जस्ट सिमिलर लाइक दैट। सो मैंने बस एक लिख दिया असाइनमेंट ऑन पाइथन, क्योंकि अभी मैं जो भी असाइनमेंट दूंगा, यू नीड टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स इन योर लोकल एंड पुश दिस। सो वो पुश कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सो इसको प्राइवेट कर दो एंड देन इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर दो, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी कर दो। जैसे ही रिपोजिटरी क्रिएट होगी इट विल लुक समथिंग लाइक इट, ठीक है। तो वो रिपोजिटरी का एड्रेस ये रहेगा, ठीक है। अभी ये सेम नाम मत लेना, कोई और नाम ले लेना। तो वो एड्रेस ये रहेगा, दिस इज द एड्रेस, ठीक है, दिस इज द एड्रेस। सो अभी एच टी टी पी एंड एस एस एच दो एड्रेस है, उसका एच टी टी पी वाला एड्रेस ले लेना, ठीक है। यहाँ पर सारी उन्होंने लाइक एक्सप्लेन करके रखा है, तो ये तीनों सेल आपके पास कॉपी करके पेस्ट कर देना कहीं पे, ठीक है। तीनों सेल कॉपी करके पेस्ट कर देना, क्योंकि वी विल नीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। वी विल नीड ऑल दिस थिंग्स। सो इनिशियली आई एम जस्ट टेकिंग दिस, ठीक है। ये फर्स्ट ले रहा हूं मैं। अभी क्या करूंगा मैं, फर्स्ट मैं ये जो भी चेंजेस है इसको मैं पुश कर देता हूँ। ठीक है, आज हमने जो जो सीखा वो यहाँ पर है, ठीक है। वो यहाँ पर इस फाइल्स में है, यू कैन सी दीज टू चेंजेस। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टेज करूंगा, गिट ऐड करो, इसको ऐड करो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये दो फाइल्स में चेंज करा है। वीएस कोड ओपन करना है, वीएस कोड में यहाँ पर सोर्स कंट्रोल में जाना है। सोर्स कंट्रोल में यू कैन रीड दिस, क्या रीड है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टू पेंडिंग चेंजेस। तो ये दो चेंजेस मुझे क्या करना है, ऐड करना है। पहले इसको ऐड करो ऐसा, ठीक है, ऐड करो। तो अभी ये स्टेज स्टेज में चले गए, एक प्लेटफॉर्म पे चले गए ये, ठीक है, एक स्टेज पे चले गए। और आपको क्या करना है, एक कमेंट मैसेज डालना है यहाँ पर कि मैं डाल रहा हूँ टीचिंग पाइथन लाइक डे 12 ऑफ टीचिंग पाइथन, ठीक है। और इसको कमिट कर दो। तो ये चेंजेस अभी कमिट हो चुके हैं। एंड इफ आई से सिंक चेंजेस, इट विल जस्ट पुल एंड पुश द चेंजेस, ठीक है। ये ऑल ये ना वीएस कोड, ये इसके वीएस कोड से भी कर सकते हैं। और ये जो टर्मिनल है, इसको टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल से भी सारी चीज कह सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ गिट पुश, ठीक है। अभी मैं हमने जो भी सीखा है आज,
सो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया, आ जाना चाहिए भाई कभी। ठीक है, सी 1.11.1 डेट विल, ठीक है, ये दो फाइल्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, इस तरीके से यू कैन पुश। तो अभी फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। सो मैंने क्या करा था, ये यूआरएल मैंने कॉपी करा है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग बैक टू वीएस कोड। वीएस कोड ऐसा नहीं दिखेगा आपको, वीएस कोड दिखेगा कुछ इस तरीके से। वीएस कोड विल लुक लाइक दिस। ठीक है, वीएस कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो वीएस कोड विल से कि पहले क्या करना है, हमें ओपन फोल्डर करना है। ठीक है, तो मैं इसको पे क्लिक करूंगा और कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली ये डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, रैंडम आई एम ओपनिंग जस्ट डाउनलोड वाला फोल्डर। अरे यार डाउनलोड नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वाला ही कर देता हूँ। अच्छा, ये फाइल नेम डालना, अरे फाइल कर रहा हूँ क्या मैं ओपन। हाँ, यू नीड टू ओपन द फोल्डर। ठीक है, यू नीड टू ओपन, अभी मैं डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर, कोई भी एम्प्टी फोल्डर ले लेना। ठीक है, एक बार मैं ना फिर से करता हूँ। सो समथिंग ऐसा कुछ दिखेगा आपको, यू जस्ट हैव टू से ओपन फोल्डर। मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ, रिपोजिटरी। ठीक है, रेपो नाम से मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आएगा। अभी एक रिपोजिटरी में मैं आ चुका हूँ और मैं ये जो टॉगल पैनल दिख रहा है इस पे क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल ओपन होगा। टॉगल पैनल पे क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, और आपको गिट इंस्टॉल रहना चाहिए सिस्टम में। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल पे भी चल जाता है सारी चीजें। आपको लाइक ऐसा डाउनलोड गिट फॉर विंडोज पे चले जाओ, यू नीड अ गिट पैकेज। ठीक है, सो इसको डाउनलोड कर लो। सो आई हैव दिस ऑलरेडी। ठीक है, इसको बस डाउनलोड करना है आपके सिस्टम के लिए। विंडोज पकड़ो और इसको डाउनलोड कर दो, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर सिस्टम और इसको डाउनलोड कर लेना इजीली। ठीक है, नाउ जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, इफ यू टाइप दिस गिट, आपको ये सारा आएगा। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है, ठीक है, आपके सिस्टम में ये नहीं है, जैसे मैंने गिट टाइप करा था, ये सब आएगा। अगर आपके सिस्टम में ये नहीं है, लाइक दिस गिट वर्जन। ठीक है, वर्जन चेक कर रहा हूँ मैं, तो गिट का वर्जन ये आ जाएगा। ठीक है, गिट वर्जन 2.37। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज गिट क्लोन, मतलब इसका कॉपी करो। किसका, जो यूआरएल मैंने आपको कॉपी करने के लिए बोला, दिस यूआरएल, दिस यूआरएल। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, मैंने कहा गिट क्लोन। अभी ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अच्छा, क्लोन वाला नहीं दिया है, लेकिन अंडरस्टैंड दिस, इफ यू वांट टू गेट दिस इन योर लोकल, यू जस्ट हैव टू यूज गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन एंड ये यूआरएल डाल देना है और इसको एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यू कैन सी वो फोल्डर यहाँ पर आ गया। ठीक है, दिस फोल्डर हैज बीन हियर एंड व्हाट आई हैव टू डू, cd, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी टू असाइनमेंट ऑन पाइथन। और अगर मैं एंटर करता हूं तो मैं इसके अंदर चले गया हूं अभी। ठीक है, और अभी मैं इसके अंदर जो भी ऐड करूंगा, लेट्स से इफ आई ऐड टेस्ट डॉट IPYNB, ठीक है, ये टेस्ट फाइल है। ठीक है, ये टेस्ट फाइल है। इसके बाद अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, टेस्टिंग है ना, आई वांटेड टू पुश दिस फाइल ऑन गिटहब। ठीक है, गिटहब, तो मैंने ये फाइल बना ली। यू कैन सी यहाँ पर अनट्रैक्ड है, यहाँ पर अनट्रैक्ड, ये अनट्रैक्ड फाइल है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है मेरी फाइल्स, जो भी फाइल्स है। ठीक है, ऑटोमेटिक से सेव हो जाती है। सो नाउ, सो नाउ एक फंक्शन यहाँ का हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे फंक्शन नहीं है, तो मैं ये सारे फंक्शन लिख के भी दे दूंगा। यू नीड टू से गिट स्टेटस।
जैसे ही आप चेक करोगे गिट स्टेटस, तो आपको पता चलेगा कि देर इज वन फाइल जो हमने ये रिपोजिटरी में ऐड करी है। रिपोजिटरी मतलब आपके प्रोजेक्ट में ऐड करी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से भी कर सकते हो आप, वो इसको प्लस कर दिया, देन कमिट मैसेज डाल के पुश कर दिया, एंड देन सिंक कर दिया। मतलब देर आर थ्री स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या रहेगा, लेट मी जस्ट ऐड अ नोट समवेयर, या मैं चैट्स में डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चैट्स में डाल देता हूँ। सो द स्टेज वन रहेगा, स्टेज वन रहेगा गिट क्लोन, ठीक है, गिट क्लोन, देन गिट यूआरएल यहाँ पर डालना है आपको, ठीक है, वो गिट का यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है। देन यू नीड टू स्टे, द स्टेज टू इज, और स्टेप, आई शुड से स्टेप टू, इंस्टेड ऑफ स्टेज आई शुड से स्टेप टू, स्टेप वन एंड स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू क्या रहेगा, स्टेप टू क्या रहेगा, गिट आप चेंज करोगे, ठीक है, यू विल मेक चेंजेस इन कोड, ठीक है, यू विल मेक चेंजेस इन कोड। देन स्टेप थ्री क्या रहेगा, यू विल से, जैसे आपके सारे चेंजेस हो जाते हैं कोड में, यू विल जस्ट से गिट स्टेटस, ठीक है। गिट स्टेटस क्या करेगा, आपको सारे चेंजेस बता देगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। देन यू हैव टू ऐड, यू नीड टू से दिस गिट ऐड डॉट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके सारे चेंजेस स्टेज करेगा। मतलब पहले हमें आगे भेजने से पहले हमें वो चेंजेस कहीं पे स्टेज करने होते हैं। स्टेज मीन्स कहीं पे रखने होते हैं, स्टेज पे रखने होते हैं, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। देन देयर इज दिस स्टेप 5, ओके, यू नीड टू से गिट कमिट, ठीक है, गिट कमिट, एंड यहाँ पर एक फ्लैग देना होता है /m, और यहाँ पर एक मैसेज डालना होता है, ठीक है, मैसेज डालना होता है। सो वी विल लर्न दिस मैसेज नाउ, ठीक है। तो मैसेज कैसे डालना है, अभी हमने क्या करा, गिट स्टेटस किया, ठीक है, हम कौन से स्टेज पे, स्टेप पे 3 पे, ठीक है। नाउ वी विल से गिट ऐड डॉट। सो अभी जो ये रेड में है ये स्टेज हो चुका है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी चेक करोगे, सो दिस इज नाउ स्टेज्ड, ठीक है, जो भी चेंजेस है वो स्टेज हो गए। अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ फिर से, तो यू कैन सी ये सारे चेंजेस स्टेज हो चुके हैं। चेंजेस टू बी कमिट, अभी ये कमिट करना बाकी है, ठीक है, अभी ये स्टेज हो चुके हैं चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गिट ऐड, सॉरी गिट ऐड तो हो गया हमारा, गिट कमिट, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, गिट कमिट एम, और यहाँ पर मैं डालूंगा टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग, बस मैंने टेस्टिंग डाल दिया। if I do this commit, you can see this will automatically, if I go again here, this will automatically, already ये main branch पे है, I need to say first main branch, और इसके बाद next रहता है step 6 is git push, ठीक है। तो जब first time करोगे you need to say git push u origin and then branch name, ठीक है, branch name, you need to add branch name, ठीक है, कुछ इस तरीके से। let me just, so these all are things there, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। so now what I will say is git push u origin main, ठीक है, ये मेन ब्रांच है हमारी, ठीक है, मेन ब्रांच है, यू कैन सी। तो पता नहीं दिस विल वर्क और नॉट, because we need to create a branch first, okay, this has worked। तो ये जो सारे changes you can see this all changes has been pushed, अभी ये untracked नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अभी ये untracked नहीं दिखा रहा है। so if I say git init, so it will say कि ये कोई तो लाइब्रेरी है, GitHub की लाइब्रेरी है, ठीक है, GitHub की लाइब्रेरी। और जो भी मैंने चेंजेस पुश करे थे, जो भी मैंने चेंजेस पुश करे थे, यू कैन सी, कहाँ पर है मेरी यार, प्राइवेट प्राइवेट यहाँ पर है। सो यहाँ पर वो आ गए, ठीक है, असाइनमेंट ऑन पाइथन। तो ये टेस्ट फाइल यहाँ पर आ गई है, ठीक है, यू कैन सी टेस्ट फाइल, और ये कमिट है, उसका टेस्टिंग हमने डाला था, कमिट मैसेज जो हमने डाला था,
और ये दो चीजें हमने वहां पे टाइप करी थी। टेस्टिंग आई वांट टू पुश दिस फाइल ऑन द गिटहब, ठीक है, ये सारे चेंजेस। टेस्टिंग आई वांट टू पुश दिस चेंजेस ऑन द गिटहब। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद दिस, ठीक है। तो अभी ये ना, लाइक एक टाइम में यू वोंट अंडरस्टैंड प्रोबेबली, अगर आपको समझा है तो द बेस्ट है, लेकिन एक टाइम पे ये समझेगा नहीं। सो ये गिट पे है ना, वी विल हैव टू हैव अ वेरी लॉन्ग सेशन, इसका अलग से क्लासेस भी ले सकते हैं। दिस इज दैट वास्ट टॉपिक, ठीक है, दिस इज दैट वास्ट टॉपिक, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है कंपनीज में, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ट्राई दीज थिंग्स, अभी जो जो मैंने कमेंट में डाला है ना, ट्राई दीज थिंग्स। स्टेप्स टू की कमांड सीडी। हाँ, सीडी क्या होता है, अभी वो जो अंडरस्टैंड करना है ना, अभी मैंने ये फोल्डर ओपन करा था, ठीक है, पहले रिपोजिटरी फोल्डर ओपन करा था, और जब मैंने गिट क्लोन किया, ठीक है, जब मैंने, ये स्टेप टू है, ठीक, राइट, जब मैंने गिट क्लोन किया, व्हाट हैपेंड कि ये वाला ये वाला फोल्डर तैयार हो गया हमारा, ये एक फोल्डर तैयार हो गया, ठीक है, ये गिट हब से आया है। सो इस फोल्डर में से मुझे इस फोल्डर में जाना है। अगर इफ यू चेक दिस लिटरली इन योर डायरेक्टरी, ठीक है, रेपो में पहले मैं ये फोल्डर में था, तो मुझे इस फोल्डर से इस फोल्डर में जाना है, इसके अंदर जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने कैसे क्लिक कर दिया, पहले मैं ये फोल्डर में था, देन आई क्लिक हियर, लेकिन पाइथन को कैसे समझेगा, पाइथन से देयर आर दीज कमांड्स, सीडी, है ना, सीडी एक होता है। अभी मैं अगर चेक करूँ ना, ls अगर मैं दबाता हूँ तो इट विल चेक, ls इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इफ आई से cd राइट नाउ, ठीक है, इफ आई से cd और टैब दबाता हूँ, तो इट विल टेल हाउ मेनी। अच्छा, यहाँ पर कुछ है नहीं अभी फोल्डर, इसलिए आ नहीं रहा। ls तो आना चाहिए। अभी अगर मैं डॉट डॉट करता हूँ, डॉट डॉट ls, यहाँ पर ज्यादा फोल्डर नहीं, तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू। लेकिन cd का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, cd इज इक्वल्स टू चेंज डायरेक्टोरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं cd यहाँ पर प्रिंट करूँ, ठीक है, if I print this cd here, so I will get this address, I should get this address by the way, ठीक है, I should get this address। हमने कुछ रन ही नहीं करा था क्या, ठीक है। now you can see what we have got is some pickle share। we will learn these things also going ahead। और अगर मैं करता हूँ cd, इसका पाथ नहीं आएगा, ठीक है, वेट, एक काम करता हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस cd, क्योंकि ये सिलेबस मैंने रखा है, दिस इज देयर इन द कमिंग लेक्चर्स, सो डोंट वरी अबाउट दिस। cd क्या होता है कि चेंज डायरेक्टरी होता है, कि हम ये फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में चले गए, दिस इज ऑल अबाउट द cd। तो जब मैं चेंज डायरेक्टरी या डायरेक्टरी के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं ये cd वाला भी कवर करूंगा उसमें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी देखते हैं कल, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। जस्ट कॉपी दीज थिंग्स, ये कॉपी करके एक बार ग्रुप में डाल देना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये कॉपी करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ऑलराइट, चलो देन मिलते हैं, हाँ कल मिलते हैं कल, बाय।